So, welcome all. In today's class, we are going to talk about principles of design. So, in previous classes, we have covered a good number of chapters. And Ankit, probably I will be taking your help in the middle to understand. Are you getting the things if you have some genuine query? Because whatever is your perspective, जो इस एज में या जो एनआईडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स का लगभग एक ही नजरिया होता है या चैलेंजेस होते हैं. So I would be seeking your support. Also, anyone and everyone who is looking at this video, today we are going to cover a very crucial part of design. So this is crucial not only at this stage when we are applying or when we are appearing for the data examination. It is equally crucial even when you get into NID, UCEED, or any good university as a design aspirant, and you choose different domains. So design principles in itself is applicable in graphic design, in product design, in fashion design, in communication design, in whatever design domain you talk. तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी वहाँ काम आती ही आती है. राइट. सो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन क्यों बोलते हैं इसको, पहले तो ये समझने वाली जो चीज है, देखो, हर व्यक्ति के या हर पर्सन के लाइफ में ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको लेके हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं. यानी कि ये मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा. व्हाई? बिकॉज इट सूट्स मी बेस्ट, है ना. सो सिमिलरली व्हाट हैपेंस इन डिजाइन कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं या सर्टेन सेट रूल्स हैं जिनको अगर हम समझदारी से अप्लाई करते हैं, whether it's product design, it's communication design, it's graphic design, it's strategy design, it's fashion design, whatever and wherever you apply this thing, things come out little better, right? Because there are certain combinations which really work well. For example, जब हम कोई माउस या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वी कंसिडर मैनी थिंग्स. इसका कलर कहाँ होगा, इसका बटन प्लेसमेंट कहाँ होगा, एक पर्सन इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, इसके अंदर बैटरी किधर से लगेगी, डीपीआई सेट किधर से करेंगे. एंड आई एम टॉकिंग मोर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ product design because that is something which I am closely aware of. But it doesn't mean that it don't apply in the graphic design, because when you are designing a poster, there are certain things which you have to take care of, where there are certain elements like text के साथ image कैसा जा रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं हो जा रहा है कि हम जो image रख रहे हैं वो इतना छोटा है कि text उसके comparison में I would say dominate कर जा रहा है ना. बिकॉज क्या होता है कि व्यूअर्स या लोग जो होते हैं या जो हमारा यूजर है, एज अ डिजाइनर वी कॉल पीपल एज यूजर, क्योंकि वो हमारे डिजाइन को यूज करने वाला है. इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपने बनाया, वो एक तरीके का उसे मैसेज देने वाला है. हम यहाँ पे चीजें अपनी अपनी सुविधा के लिए, अपने एडवांटेज के लिए नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट द आर्टिस्ट. वी सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द डिजाइनर एंड द आर्टिस्ट की artists are relatively free to explore, but as a designer we have certain constraints, and when we are working in constraint we have to make sure that what we deliver is useful to our user, you know. And that is where the significance of principles comes. That is where the understanding of this principle, that is where the application part of this principle comes. Now, एक क्वेश्चन जो कई बार सामने आता है या स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो ये कि हम इसको डेट एग्जामिनेशंस में कैसे अप्लाई करने वाले हैं. बिकॉज डेफिनेटली दिस क्लासेस आर फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग टू मेक अ करियर इन डिजाइन, who are appearing for various DAT examination. DAT means design aptitude test, right? Especially in the part B, that is drawing aptitude. तो अभी रिसेंट में, एज आई हैव सेड अर्लियर, वो क्या रहा है कि जो पार्ट बी का वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है. बिकॉज आई थिंक व्हाट एनआईडी, यू आईआईटीज एंड ऑल द बिग यूनिवर्सिटीज, व्हाट दे हैव अंडरस्टूड क्लियरली कि इन अ creative field, if you have to peep into design, mind of a person who is going to pursue design,
यू हैव टू गेट द रिफ्लेक्शंस। अब रिफ्लेक्शन कैसे, वो आपको एक सिचुएशन देते हैं, उसमें आपको कुछ डिजाइन सॉल्यूशन प्रपोज करना होता है। इट कैन बी अ tangible थिंग, इट कैन बी अ मोबाइल एप्लीकेशन, इट कैन बी अ पर्पस ड्रिवन थिंग, इट कैन बी अ सिचुएशन गिवन थिंग, एंड देन यू हैव टू रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंगली। एंड व्हेन यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, तुमको नहीं पता कि क्या चीज कहाँ पे कैसे काम करती है, what you produce is little bit random. But when you have understanding of suppose balance क्या होता है, तो छोटी सी चीज है, मैं छोटा सा चीज देता हूँ। आप डेट के एग्जामिनेशन में इफ यू आर गिविंग अ सिचुएशन सपोज, एंड देन व्हाट यू आर डूइंग कि एक इमेज तुमने एक साइड पे रखा और दूसरे साइड पे उसका डिस्क्रिप्शन रखा। सो यू, इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैलेंस फ्रॉम द टुडेज क्लास, फ्रॉम एनीवेयर इन द पास्ट, यू विल पुट इमेज इन प्रोपोर्शनेट टू टेक्स्ट और टेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो कई बार तुम देखना, जो फैशन मैगजीन्स हैं या जो हमारे ब्रांड्स हैं, जैसे सपोज मैकडी पे जाओगे, या उनके जो ब्रोशर्स हैं, उनके जो मेन्यूज हैं, इमेज और टेक्स्ट को बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इमेज बहुत बड़ी है, टेक्स्ट बहुत छोटा सा है, दिख ही नहीं रहा। या ऐसा भी नहीं है कि टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जा रहा है, इमेज कम ये हो जा रहा है, टेक्स्ट इमेज को डोमिनेट कर दे रहा है। सो ये सारी अंडरस्टैंडिंग बॉइल्स डाउन टू अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल्स। ओके, एक और जो इसमें आर्ग्यूमेंट आता है डिजाइन प्रिंसिपल्स में, या एक मैं कहूंगा एक डिबेट जो होती है मोस्टली, दैट हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर। तो सम पीपल से 10 प्रिंसिपल्स आर देयर, सम पीपल से 5 प्रिंसिपल्स आर देयर, सम पीपल से 7 प्रिंसिपल्स आर देयर, एंड सम इवन कोट 20 प्रिंसिपल्स आर देयर। So, muta muta, if I tell you broadly, there are 7 principles which are relatively frequently used, which are relatively widely applicable in lot of field, which are, are important from that point of view for our examinations. So, आज हम उस 7 में से भी 5 की बात करने वाले हैं because of the time limit and certain queries if students have, right? So, coming to our presentation. So design principles are basically the initial and fundamental idea which is employed when you are developing something which should be aesthetically pleasing, but at the same time functionally right. यानी कि हम इतनी सुंदर कार बना दें, बहुत अच्छी हम ऑटोमोबाइल बना लें और उसका इंजन अच्छा नहीं चलता, तो सुपर कार किसी काम की नहीं है, राइट? सो फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक्स, इट गोज हैंड इन हैंड. So similarly, when you are doing something in graphics, suppose you are given a situation कि भाई you have to make something for old age people. You have to suppose make a mouse for old age people. उनका hand shiver होता है, या वो कंप्यूटर में कैसे यूज करेंगे, and then you have to give a description. So it is always advised in your data examination कि एक बड़ा सा इमेज बनाओ, फिर उसके कुछ थंबनेल्स बनाओ, फिर कुछ उसके एक्सप्लोडेड व्यूज बनाओ, and then you put the description along with it. But it should be visually pleasing. It should follow the design principles which we are going to discuss today. और उसके बीच बीच में मैं एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा. So there are fundamentally actually 7 principles, but we are going to talk crucial 5 principles today because of the time limitation. And out of those, the first one is the balance. So बैलेंस का अगर शाब्दिक अर्थ यानी कि लिटरल मीनिंग हम समझने चलते हैं, तो बैलेंस का मतलब होता है संतुलन करना, यानी कि बराबर कर रखना. जैसे नेचर में CO2 और ऑक्सीजन का एक बैलेंस है, ठीक है ना? उसी तरीके से हम डिजाइन में या पोस्टर बनाते वक्त या उसके एप्लीकेशन पार्ट में हम एक बैलेंस रखते हैं. वो कैसे? नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस के फॉर्मेट में. सपोज इफ यू लुक एट माय बैकग्राउंड, इफ यू सी देयर इज अ टेक्स्ट, देन आई एम सिटिंग इन अ सर्टेन position, and rest of the background is left blank. So it is directing your eyes onto me and the text which is the requirement. ठीक है ना? इसमें भी एक चीज फॉलो हो गई, हायरार्की. हायरार्की इन द सेंस my video, my size of the video, my face is bigger and text is comparatively smaller because as per the need, यहाँ पे बोलने वाला या जो टीच कर रहा है या वो बात को बता रहा है, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड देन सेकेंडरी इम्पोर्टेंट थिंग इज
from where and under what banner they are coming, and it's completely in sort of try to be put in balance. तो बैलेंस में क्या होता है, इफ वी सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली देखो यहाँ पे ना बैलेंस की जब हम बातें करते हैं तो सच में हम तराजू लेके या कोई स्केल लेके हम चीजों का वेट करने नहीं बैठने वाले। बैलेंस मींस विजुअल। तो ज्यादातर यहाँ पे हम जितने डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात करने वाले हैं, वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, मोस्टली इट्स इन द फॉर्म ऑफ द विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, कि विजुअली बैलेंस कैसे दिखेगा। ऑलराइट, जैसे हमारे लेफ्ट फेस और राइट फेस में एक बैलेंस है, मतलब जो इधर है वही उधर है। इसे सिमिट्री भी एक तरीके से बोलते हैं। तो बैलेंस में भी तीन पॉइंट्स आते हैं, वो हम आगे बात करते हैं। इसमें एक पॉइंट सिमिट्री आता है, तो वो आगे हम बात करते हैं। तो बैलेंस मीन्स आप समझ रहे हो, टेक्स्ट का बैलेंस, इमेज और इमेज का बैलेंस। आप मैगजीन पढ़ते हो तो इमेज और टेक्स्ट का बैलेंस। गाड़ी जब हम बनाते हैं तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस, है ना। कोई प्रोपोर्शनेटली हम क्रीचर क्रिएट कर रहे हैं या एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं तो साउंड और लाइटिंग का बैलेंस, ये सारी चीजें करती। इवन यू लुक एट द सॉन्ग्स, so as per the theme, there's a balance of vigor, there's the balance of क्या बोल सकते हैं, जैसे आप कोई भी रिसेंट मूवी अगर जो भी आप देखो, तो देर आर सर्टेन विजुअल एलिमेंट्स जिसमें आपको डर पैदा किया जा रहा है, तो कलर्स भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ग्रे होंगे, रेड होंगे, जो उसको बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि डर का माहौल है और वो वाइट दिखा रहा है। ऑलराइट, तो ये हम ज्यादातर बात विजुअल बैलेंस की यहाँ पे करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, बैलेंस ऑफ बैलेंस इज शोन इन डिफरेंट साइज ऑफ ट्रायंगल्स। So if you look at this as the on the bigger triangle which is blue in the color on the left hand side, and three triangles which are in a little bit oranges in shade, and how they are balanced in each other। आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट में देखो, और देखो यहाँ पे बैलेंस का मतलब वेट का भी बात हो रहा है। तो इफ यू कंपेयर विद द लेफ्ट वन, राइट वन का जो विजुअल वेट है वो कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज वहां पे एक वाइट एलिमेंट को डाल दिया गया है। बट स्टिल इफ यू सी स्ट्रक्चरली इट इज बैलेंस्ड, यानी कि एक के ऊपर एक है। बट सपोज एक ट्राइंगल जो राइट हैंड साइड पे है वो हल्का सा टिल्ट हो जाता, तो इमीडिएटली इट वुड हैव गॉन आउट ऑफ बैलेंस। बैलेंस या संतुलन उसमें नहीं दिखता। अब बैलेंस भी देखो दो तरीके के या तीन तरीके के बेसिकली होते हैं मोटा मोटा। एक नया जो रिसेंट में ऐड किया गया है वो है रेडियल बैलेंस की हम बात करते हैं। तो पहला होता है सिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस, देन सेकंड वन इज द एसिमेट्रिकल बैलेंस, एंड द थर्ड वन इज द रेडियल बैलेंस। तो इनको हम एक एक करके एक वीडियो के मार्फत भी समझने की कोशिश करेंगे। बट फॉर अ व्हाइल, सिमेट्रिकल बैलेंस मींस सिमेट्री, यानी कि जैसे हमारे फेस में सिमेट्री है। But guys, I tell you one interesting thing. Nature in itself don't support the balance. Balance in the sense, विजुअल बैलेंस तो होगा। देखने में कभी ध्यान से देखना, एक पेड़ होता है जिसमें कई सारी पत्ती होती है। When you will see, लेफ्ट वाली पत्तियां राइट वाली से थोड़ी कम या ज्यादा होती हैं। तो नेचर जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है एसिमेट्रिकल बैलेंस, बिकॉज नेचर इज रियली गुड एट इट। एंड ओवर द टाइम व्हेन वी गो इन डिजाइन, सो सिमेट्रिकल बैलेंस इज इजी टू मेक। भाई आपने एक फेस बनाया, दो आईज बनाई, एक सेंटर में दो नोस्ट्रल्स बनाए, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट एसिमेट्रिकल बैलेंस के साथ प्ले करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, and it is something which we learn over the time। if I say at this stage, asymmetrical balance के साथ काम करना, it takes years of experience, I would say। And the third, I will show you a video which will give you a better idea। देन द थर्ड कैटेगरी इज द रेडियल बैलेंस। देखो रेडियल बैलेंस में क्या होगा कि तुम्हारी आंखों को ऐसे डिराइव किया जाएगा कि वो कहीं एक सेंटर पे जाके टिकेंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा एक राउंड स्टेयर केस होता है, और आप अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखो तो आइज ट्रेवल इन सर्टेन वे दैट इट डायरेक्ट्स टू द सेंटर। So this I will try to share a video with you guys to make you understand better। So I'm switching over to video। अंकित जस्ट लेट मी नो कि ये साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट,
So I am playing the video. Just do let me know the sound is okay or not. One of the designer's most faith. And is the screen visible? Ankit, the screen दिख रहा है? Yes, sir. Sound भी आ रहा है. Okay, okay, great. So through this video, we will try to understand what is symmetry and asymmetry. Basic visual tools is the distinction between symmetry and asymmetry. You may be surprised to discover how much you can enhance your work by harnessing this powerful distinction. Ellen, you love symmetry. Tell us why. Many natural organisms are symmetrical. Look at me. I'm symmetrical. My arms and legs keep me balanced. A leaf grows outward in a symmetrical pattern. The arms of a starfish radiate out from the center. That's called radial symmetry. Symmetrical layouts are inherently stable and balanced, and that's why designers for centuries have gravitated towards centered layouts. So in a symmetrical design, I should be able to draw a line top to bottom, and it's the same on either side. Or I could draw a line through the center, and it's the same above and below. Well, Jennifer, I know you love asymmetry. Tell us about that. I think that symmetry is more inherently understandable because we can all relate as human beings that are symmetrical to that principle. But you may be wondering, what exactly is asymmetry? Asymmetry in design really is distributing elements so that moving them around until they really do feel balanced. So that really is a matter somewhat of intuitive perception. Nature is full of asymmetry. A mountain has balance even though its volumes are irregular. Modern architects unlocked the power of asymmetry. This building was designed by Le Corbusier in 1925. It has a tree growing up through the courtyard. These album cover designs are asymmetrical. The flush left type anchors the compositions toward the left, but there's enough activity on the right to keep each design balanced. These layouts by Rick Bellicenti feature asymmetrical distribution. The layouts feel alive yet balanced. When we use the term dynamic or dynamic asymmetry, what we're really referring to is design that really moves and changes. Design in which the viewer's eye is actively moved around and through a design. Symmetrical layouts can be dynamic too. You can vary the size of the elements, or you can crop them on the page in a way that suggests tension and movement and growth. Centered type seems like a very traditional composition, but here the designer has created centered type, but also introduced drama by shattering the type, by making it large, by pushing it together, compressing the line spacing. So the composition may be centered, but it's very active. This design consists of a central cross created out of typography. And then there's a burst of type, a disruption of type on the left side that upsets that perfect symmetry of the design. The layout in a book or a magazine is always symmetrical because of that strong central spine down the middle. Here, designer Paul Sayre has positioned a series of photographs right through that spine, right through the center of the book. And he's also created typography that plays very actively with the spine of the book. So these are symmetrical designs, but they're doing it in a way that's very active and dynamic. Here's a web design that has a very strong central axis. It's yellow on one side and white on the other. And the designer has taken his web design and applied it to a print publication. Inside the book, there's a little half sheet of yellow that becomes a kind of book within the book. So it's very centered, but it's also dynamic and playful. It engages the reader. Symmetry is not always an either-or decision. In this poster series, some solutions are strongly symmetrical and some are asymmetrical. In every case, the designer has introduced tension and movement through contrasting colors, shapes, and patterns. So here's a tool, symmetry versus asymmetry. It's basic, it's universal. You can look at any piece of design and ask, is it the same left and right, or is it different? I love symmetry. Symmetry is balanced. It makes sense. It relates to so many things in nature. But as a designer, we have to harness it in a creative and dynamic way, not just a dumb thing right in the middle.
And I love asymmetry because for me, asymmetry really energizes the page by encouraging the viewer's eye to move all the way organically through the page in a much more exciting way. All right. So this was a very good video, informative video talking about the symmetry and the asymmetry. So basically at this level for us, symmetry understanding, application part of the symmetry and the asymmetry is crucial to us. The radial symmetry you often see in flowers, in I would say sunflower, if you particularly if you ask me, is a wonderful example of radial symmetry where the eyes, the movement of the arrangement of the seeds directs our eyes to the center. All right. So symmetrical balance is not only in the graphic design, asymmetrical balance is not only in the product design. When we are using these principles, it can both be applicable in the tangible, again, I would say, and the intangible design patterns. So a very famous, designer who is Dieter Rams, I would say, and I would share the work of him. If my screen is visible to you guys. Okay. So if you look at his work, who he worked basically for the Braun, and he has developed a series of products. Suppose if I talk about his very famous radio, which is Braun T1000 word receiver. So I always appreciate, so and again, it's a very subjective thing. And I love the way he create the balance between, if you look at the speaker side of this product and the button layout and the colors, and which is the most crucial is always given a highlight. And this is also another important design principle which is called contrast or emphasis. So alternatively कई बार confusion होता है, but pardon me, but it would be more emphasis. Emphasis is put on something which is more important, which is more crucial, जो ज्यादा जरूरी है. And the way I speak is the emphasis. The product may, if you look, there's emphasis on this button. Yani this may be the most important button, which will be the on or on off button, or some primary button like this thing. And emphasis is not only created by the color, it is also created by the size and the shape. So suppose इस रेडियो में when there are circular buttons, ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर का एक यूज है बिकॉज वी हैव टू रोटेट इट इन अ सर्टेन वे. बट सपोज ये बटन्स ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं या स्क्वायर शेप के होते हैं, यानी क्यूबॉइडल शेप होता है, क्यूब होता है, तो कितना यूनिक दिखता है. Immediately it would have traveled our eyes to the oddness of the element, and it is created by many ways. So I will talk about the emphasis next. But coming back, if you see, when amongst the, there are 10 principles of given by deterrence for a good design, which I have discussed in the past classes. If you have not seen this video, please go and look to those videos. And also, once again, to remind more to all of you that our free study material for download is available at the website, which the link will be shared in the chat box and the description box in the YouTube. You can go and download the free study material anytime. This is for anyone and everyone who is aspiring to be a designer, who want to crack the data examinations, and they want this help at a very budget, or I would say very free of cost, almost free of cost to all of you, to our viewers. Okay. So if you look at this fifth principle, which says good design in unobtrusive, यानी कि good principle किसी भी चीज को बाधा नहीं बनता है. And if you see here T4 suppose or T3 I would say, जो स्पीकर का जो ये नेट है, मैश है, और जो डायल है, इसको कितना अच्छे तरीके से विजुअली बैलेंस किया गया है. So this is the application of balance in product design, I would say. Coming back to our next topic. Sir, I have a question. Hello.
हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ बोलो। ओके। सर अगर कुछ बुक्स हैं जो अपने में सीरियस कंटेंट है, अगर कोई जैसे कोई अगर सीरियस नॉवेल है या फिजिक्स की अगर कोई बुक है या उसमें ऐसा कोई कंटेंट है, तो ज्यादातर उसमें टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में सिमेट्री ज्यादा दिखाई देने को मिलती है। और कुछ अगर ऐसा कंटेंट है जो थोड़ा माइंडफुल है या फिर प्लेफुल कंटेंट है, अगर कुछ या क्रिएटिव कंटेंट है, तो उसमें ज्यादातर एसिमेट्री जैसे बुक के कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देती है। तो देखो, ये कुछ ऐसा रूल्स है या ये दे यूज लाइक दिस? नो नो, first of all, here I would give any comment when you share with me an example. या तो हम लोग ऐसा एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर करो. So we have our helpline. So you can write to us at liveclasses@career360.com. The link will be provided and you can ask your question there. So क्या होगा ना, इमेज मेरे सामने होगा तो I would be better able to answer your question. But what I have understood from your thing is, देखो यार इसमें कई चीजें होती हैं. पहली चीज तो जो पब्लिश कर रहा है बंदा, वो कॉस्ट कटिंग तो नहीं कर रहा है. सो एज आई सेड, वन क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस थिंग इज द कॉस्ट पार्ट. कई बार क्या होता है कि हम पेपर बैक एडिशन ले रहे हैं या हम क्या ले रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या उसने पीडीएफ को उठाया, चेप दिया, प्रिंट कर दिया. आर यू टॉकिंग अबाउट some you know identified या renowned things, or are you saying about novels जो हम सड़क पे खरीद लेते हैं या हम सस्ते में खरीदते हैं? किसकी बात कर रहे हो, मैं वो समझना चाहूंगा पहले. जैसे फिर फेमस बुक्स जैसे शेक्सपियर की कोई बुक होगी तो उसमें बहुत प्रिसाइज वे में होगा उसका राइट, जो अंदर मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है तो वो कंटिन्यूअस पूरी बुक में दो पार्ट में डिवाइडेड ही है। हमें कोई थोड़ा थोड़ा राइटअप इधर थोड़ा राइटअप उधर, मतलब कोई एसिमेट्री दिखाई नहीं देगी। ज्यादातर सिमेट्री में ही राइटअप होगा, उनका मेन फोकस उधर होगा। तो मतलब सीरियस कंटेंट में ये होता है, और थोड़ा प्लेफुल कंटेंट है जैसे क्रिएटिव में एक तो स्टीफन किफ्टर की प्लेफुल बुक है। में, हाँ ये बात, ये कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि प्लेफुल में तुम्हारे पास ये लिबर्टी है. सपोज मैं बच्चों की बुक बना रहा हूँ, अगर वो मैं एक तरीके से बैलेंस्ड इतना स्ट्रक्चर्ड बनाऊंगा तो वो शायद बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि वो व्यूअर या वो रीडर अलग है, वो डेमोग्राफी अलग है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग सपोज सम लिटरेचर पार्ट, तो वहां पे दो चीजें आ जाती हैं. पहला तो आता है कॉस्ट. हर इंडस्ट्री का पहला चीज है कॉस्ट. दूसरा, जो जो उनका टारगेट ऑडियंस है वो कौन है ना. और फिर दूसरी तीसरी चीज ये भी है कि बजट क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड से बजट ही होता है, कि जितना अच्छा बजट है और अगर लोग उतना दे पा रहे हैं, पे कर पा रहे हैं उस चीज के लिए, तो व्हाई वुड नॉट दे एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट लेआउट्स एंड डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कलर्स विच रियली वर्क्स. क्योंकि हम ना चीजों को इमेजेस में समझते हैं, बैलेंस में समझते हैं. तो सीरियस कंटेंट में तो थोड़ा सा इस चीजों का तो ख्याल रखना पड़ता है. बट आई वुड से वो प्रोड्यूस करना ज्यादा आसान है, बजाय कि क्रिएटिव कंटेंट के जो फ्री फॉर्म में फ्लो करता है, यानी कि जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स को वो फॉलो करते हैं बट वो हमको विजुअल नहीं होते. और सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक एलिमेंट जो है ग्राफिक डिजाइन में, वो हम उस पर डेफिनेट कमेंट तब कर सकते हैं जब आप उसका एक एग्जांपल मेरे सामने लेके आओ, तो शायद मैं बेहतर बता पाऊंगा. ऑलराइट, तो यू कैन राइट टू अस ऑल्सो, so I will try to take up your query. But this is a very good observation, I would say. So, shall I proceed with further with the rhythm, which is the next topic, which is the next element of this thing? यस सर, यस। Okay. So, rhythm देखो क्या होता है. rhythm को, if somebody asks me what is rhythm, इसको बहुत ही समझने का सिंपल एक तरीका है, लय. जैसे हिंदी में हम लोग लय बोलते हैं. रिदम मतलब चीजों का ऊपर या नीचे, यानी अप या डाउन तो होता है, बट इतना नहीं होता कि वो बेसुरा हो जाए. जैसे ऐसे राग टाइप का समझ लो, या जैसे आप देखो ना, कई आर्टिस्ट हैं, कई सिंगर्स हैं, वो ऊपर लेके जाएंगे, देन उसको धीरे ग्रेजुअली साउंड को नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे. तो ये जो मॉड्यूलेशन है, जब तक वो सूदिंग है, यानी कि हमें देखने में और सुनने में, तो रिदम सिर्फ एक चीज में नहीं लगता, डिजाइन प्रिंसिपल्स में नहीं है ये, लाइफ में और भी एरिनाज में इक्वली एप्लीकेबल है. ठीक है. सो रिदम इज बेसिकली अबाउट द विजुअल फ्लो, मूवमेंट क्रिएटेड बाय द रेपिटेशन और द अल्टरेशन ऑफ द एलिमेंट्स. अल्टरेशन मतलब
ऑल्ट्रेशन चलो हम एक वीडियो के थ्रू समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। बट रिदम का यूज क्या होता है, एक सेंस ऑफ ऑर्डर देता है कि देख भाई, जिंदगी में दुख आएंगे तो सुख भी आएंगे, वो भी लाइफ का एक रिदम है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा बैड टाइम चलेगा, एक जैसा गुड टाइम चलेगा। सो इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है रिदम का नहीं हो सकता। और इसको समझने के लिए बेटर आई वुड शेयर अ वीडियो विद यू गाइस, है ना। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो रिदम को ना बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप इससे समझ सकते हो, वही लाइफ के एग्जाम्पल से, कि लाइफ में एक रिदम होगा हमारे। ओके, so this is a very good video which I am going to share with you. This guy has tried to share a good content over rhythm. Okay, I'm playing the video. Just on with our next principle, which is rhythm. Similar to what you know about patterns, rhythm is about using a variation of the same elements repeatedly throughout the design. Now, stay with me. Let's think about music for a second. So, most songs have a rhythm, and as a percussionist, I'll just narrow down and use percussion or the drums as an example. So, we have a tempo that is set for the song. Let's say it's 90 beats per minute. Well, that is the tempo, that is the metric we're using for how fast we're going to play, but the rhythm is what you do with that tempo. So we can have our classic rock rhythm, for example, and that is going to carry throughout the entirety of the song. And you can do the same thing with design. So let's look at some examples with a good sense of rhythm. So here is a template from Kittle, and we are utilizing a couple of different things here, including pattern. We also have good sense of color, and we have this overall rhythm. If you'll notice, what we're doing is spelling out the word love. So if I cross the line down here across this way, you can see that there is LOVE. Now, with each part of the shape or a pie chart that's been cut off from one section, you can tell that each part of the shape is turning a different direction each time. And then what that does is continue on to the next section. So in the first column, we have L, and the second one, we have OVE. And so we have this rhythm that is drawing your eye from here all the way to the E down here at the bottom, or what would be easier is just connecting the L all the way down to the E. It's actually quite a brilliant template. So here is another example where rhythm is at play because we have a sense of unity in all of these shapes being used. So we have these different square sections that aren't necessarily in any form or fashion, so they're not necessarily a pattern, but they do give us a good sense of rhythm throughout the design, which again help carry us all the way down to the bottom. So we have punk is not dead, but we're using these boxes throughout to create this rhythm or this repetition of a different series of shapes and sizes to carry us throughout the design. Now, if you want to see other tutorials using Kittle, I have these videos here on my right So what I want to briefly cover. okay. Okay. So this was about the rhythm. So as I also took the same example almost what this guy, the rhythm को समझने का the best example is the music. And rhythm is the gradual alteration of the elements to create a soothing effect, or visually I would say visual movement around the eyes, for the eyes, sorry, not around the eyes, for the eyes. Okay. Then we talk about the third thing, which is the movement. Acha, movement in itself is also a very crucial element in photography. And not only movement, when I am talking about all these things, since these are mostly visual, so it is more focused around photography. It is also equally applicable for graphic design. It is equally applicable for product design. Certain things. So movement is basically how the viewer's eye move. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल is the golden ratio, and golden ratio or golden rule, which I will share on the screen with you guys. एक minute, if you can, if you allow me. So golden rule is basically a shape. If you see, it is a certain arrangement of numbers
which comes out to be a certain ratio. And if you see, it is basically followed in the nature. And when you look at it, I would try to show you the image in itself first. So I would say, if I have to type, okay, so let me share with you the screen. If you see something like this, and ये shape आप लोगों ने कई बार देखा होगा, which is called golden ratio. See how our eyes are moving around it. हमारी आंखों का traveling कैसे हो रहा है. Or you look at this image. So similarly, in this shell of snail, this thing is followed. And if you see in sunflower and also in the certain plants, this movement is called, this is a good example of movement. So let me also share a video with you to make it more, understandable and easy to understand. So if you have any doubt, please do let me know. मुझे एक बार बोल देना so that I can overcome it. Okay. Okay. Hey guys, this is Matt Core from ControlPaint.com, and today's Principle of Design video is going to be all about motion. Now, in the past, we've talked about emphasis and focal points, and what those do is help tell the viewer where to look. Well, motion is exactly the same thing. It's one more tool you could use to control where the viewer's eyes go when they're looking at your painting. And since this is an inherently invisible aspect of the composition, I'm going to show you some of my paintings and draw some arrows over top to explain how I am directing the user's eyes around my canvas. So first off, we've got this bug monster. And this is a very simple diagram. The goal is always to point the viewer towards the focal point. And here, my main focal point is the monster's face. So I arrange the arms and the pinchers in sort of a circular motion in which the eyes are led around the perimeter of the image. And then when they reach the bottom of the claws, they look back up towards the head. And this is intentional. At the thumbnail stage of this image, this was the flow I had in mind. And really all the rest was just polish. All right, this one's a little more complicated. There's a few more elements, but the ideas are the same. I want the viewer to look at the focal point. So for this one, I made sure to put a single face in the image because people love looking for faces. Beyond that, I have the large angles of the bird's wings, creating straight lines pointing directly at the focal point. There's also a large bird flying in a vector that is straight aimed at the face. And then I use repetition. And repetition is a great way to lead an eye through the image. So you can see in this flock of birds, all the birds match. So I know if there's a big one, it's up close to the viewer. And if there's a tiny one, it's far away off in the distance. And so I created a general sweeping formation, leading the eye from the middle right, down around the image, and back up towards the bird's face. And all of these choices were intentional, made to control the viewer's eye. This next image poses a challenge. Here there is a scuba diver escaping from a really big monster, and in some ways, your eye follows this scuba diver's gaze right off the left side of the image. And that's a bit dangerous, since I want to keep your eyes looking at the focal point, which is the monster's teeth. I made sure to illuminate a bit of the monster's tail to give a circular path to bring the eye back around. And this is going to help stop your eye from going straight off the left side of the page. So it brings it around, and then it follows the neck, which is also illuminated, straight back up to the face. And this gives you a nice circular motion that your eye can keep doing this loop over and over. And hopefully their eye won't leave off the left side of the page in the direction the diver is looking. This is a great example of an image that has nothing moving inside of it. It's a city, totally still. But I made the composition in such a way that it has a spiral motion to it.
which is pretty pleasing to a viewer. So your eye is actively moving around this spiral, going deeper and deeper into the canvas. And in doing so, it gives it a feeling of activity, even if the subject matter is very still. So far, all of my examples have been very environment-centric. Well, here's a character standing on a white background. Turns out all the same rules apply. Once again, my goal is to get the viewer looking at the focal point. And here, a lot of the character's acting is coming through in his facial expression. So I want the viewer to see that. As a result, I have large sweeping curves of the clothing that point up the form. And the composition is so important that I allowed it to dictate some of this character design. So if you were to follow this curve up through the neck of the instrument, I don't want to lose the viewer's eye straight off the top of the page. So I made sure the neck of the instrument pointed back at his face. And it gives it that distinctive right angle look to it. But that was ultimately decided on based on my compositional flow. So even if you have no background and just a single character design, you should still use the idea of motion to direct a viewer's eye through the image. If you do it correctly, they'll have no idea that you're intentionally moving their eyes around. They'll just find the image pleasing. It's amazing how it works. My guess would be you're already doing this to some degree without even realizing it. Okay. So guys, this is also a very good example. This image on your screen, this is a good example. Basically, देखो movement में होता क्या है in design principle. देखो एक center point होगा जिसके around your eyes will travel. So जब हम कोई भी कंपोजिशन बना रहे हैं, when we are making a product or a composition क्या होता है, where we bring together different elements and we balance in such a way then in overall in itself it combine to make a wholesome product or identity or a character or something. Suppose if I have to make a fan, so it's a composition of certain elements which come together, just the blades, nuts, bolts, center hub, a mounting. This all come together to make a successful product. तो एक फैन बनता है. बट इफ यू सी एंड इफ यू लुक, यू कैन टीयर अपार्ट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, बट सेंटर में आके वो एक जगह पे सारी चीजें जोड़ती हैं. तो जैसे एक फैन में होता है वैसे ही चाहिए, कई बार हम लोग कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं या कुछ हम ग्राफिक जनरेट कर रहे हैं. सो इन दिस वे वी मेक आर और वी बैलेंस आर कंपोजिशन सच अ वे दैट ऑल द सपोर्टिंग एलिमेंट जो भी आसपास है वो उस सेंटर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के अराउंड आई वुड से ट्रिगर कर रहा होगा या आपको इंस्टिगेट कर रहा होगा, प्रोवोक कर रहा होगा. एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल व्हेन यू आर अ फोटोग्राफर. सो योर आईज आर ट्रेन्ड टू लुक एट द मूवमेंट. है ना, जंगल के आप लोग कई बार शॉट्स देखोगे, सो देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस जहाँ पे पेड़ और नदी और सर्टेन नेचुरल एलिमेंट्स का यूज करके दिस फोटोग्राफर्स use this understanding fantastically to direct towards the lion or the tiger as a subject. तो फोटोग्राफी में मूवमेंट का बहुत अच्छा और बहुत ही प्रैक्टिकल यूज देखने को मिलता है. इवन व्हेन यू गाइस आर कैप्चरिंग द इमेजेस यूजिंग योर सेल फोन्स, तो वहां पे यू टेक केयर ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग एंड यू सी यू विल गेट द ब्यूटीफुल इमेजेस. ऑलराइट. So movement is another important principle which is we should be aware of. Coming back to our presentation, next topic or next headline will be emphasis. देखो एम्फेसिस का मतलब होता है वही जो मैंने अभी बोला भी था, और डीटर रैम्स का जो रेडियो में मैंने दिखाया था ना, ऑरेंज कलर का जो बटन देते हैं. एक्चुअली एम्फेसिस इज टू स्टैंड आउट, यानी कि सब जरूरी में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है. राइट. जैसे हमारे पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा एम्फेसिस या पहला इंट्रैक्शन हमारे फेस पे जाता है, एंड दैट इज वेयर दिस होल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कम्स अराउंड. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्फेसिस ऑफ फेस वैल्यू when it comes together. So emphasis ka use in the visual language we use to direct or to immediately govern the viewer's eye or the user eye to a targeted location. हम जहाँ पे उसकी आंख को ले जाना चाहते हैं वहां हम ले जाते हैं
यूजिंग दिस प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब जोर या दबाव देखिए किसी बात को कहना है, यानी कि अगर मैं यही बात चिल्ला के बोलूं तो ये एम्फेसिस था, है ना, ताकि मैं उस बात पे जोर देना चाहता हूँ या मैं कई लोगों की भीड़ में से उसको अलग करना चाहता हूँ। अब ये हम कई तरीके से अचीव करते हैं, मेनी वेज वी डू इट। वन इज बाय वेयरिंग द कलर। तो सपोज बहुत सारे ग्रे डॉट्स है और उसके बीच में एक येलो डॉट है, तो डेफिनेटली उस पर एम्फेसिस क्रिएट होगा, यानी आपकी आईज उसकी तरफ जाएंगी। कई बार वो कॉन्ट्रास्ट से भी हम ये काम को करते हैं। सो कॉन्ट्रास्ट इन इटसेल्फ इज अनदर प्रिंसिपल, बट एम्फेसिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, ठीक है। दूसरा एम्फेसिस हम कैसे क्रिएट करते हैं, शेप के थ्रू भी करते हैं। एज आई सेड, वो राउंड बटन की जगह पे अगर ट्रायंगुलर कर देते तो शायद उस पर थोड़ा दबाव हो जाता है, हालांकि वो यूजेबल कम हो जाता है। एंड सिंस वी आर डिजाइनर्स, वी आर एस्पायरिंग टू बी डिजाइनर्स, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी थिंग इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ एनी कंपोजिशन, एनी प्रोडक्ट, एनी ग्राफिक डिजाइन, एनी डेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। उसका फंक्शनल पार्ट क्या है, फंक्शनल सर हम जो सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं डेट में, वो कितना प्रैक्टिकल होने वाला है और किन एलिमेंट्स पे हम एम्फेसिस करने वाले हैं। तो हम ये कैसे करते हैं, स्केचिंग के थ्रू करते हैं या सर्टेन कलर्स का यूज करते हैं। या कई बार तुमने देखा होगा जब तुमने स्केच किया कोई प्रोडक्ट को या सॉल्यूशन को या किसी इंसान को, तो हम आउटलाइन कर देते हैं। तो दैट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस मीन्स किसी चीज पे जोर देके दबाव देके बात को कहना। एंड आई विल सी इफ आई हैव अ गुड वीडियो अराउंड इट जल्दी से। बट बिफोर बिफोर आई गो टू वीडियो, आई वुड प्रेफर कि हम एक बार जल्दी से एक लास्ट टॉपिक, लास्ट हेडलाइन जो कि है हार्मनी, लास्ट प्रिंसिपल, हार्मनी। हार्मनी इज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से, नॉट टू परसीव इजी, क्योंकि हार्मनी एक्चुअली थोड़ा सा सोसाइटी में या हम में एज ए ह्यूमंस नहीं होती है। बट जब होती है और जब एकजुट होके लोग चीजें साथ आती है तो उसको हार्मनी बोलते हैं। जैसे हम एक ऑर्केस्ट्रा की बात करते हैं, ऑर्केस्ट्रा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब सोचो कोई ढोल बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई कोई कुछ शहनाई बजा रहा है, कुछ गिटार बजा रहा है, और कोई एक हारमोनियम बजा रहा है, ठीक है। ये 5 या 6 सिंगर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं, और हर कोई अपना अलग राग में गा रहा है ना। तो हाउ सूदिंग विल इट बी, कितना प्लीजिंग होगा, नहीं होगा ना। तो सिमिलरली हमारा हारमोनी में क्या होता है कि व्हेन दिस ऑल कम टुगेदर, सपोज ये पांचों जो म्यूजिशियंस हैं ये दे ऑल कम टुगेदर, then they make a complete composition, then they make a interesting composition, and this is called harmony. In this can be a good example of harmony, I would say, in life. Otherwise harmony means combining related elements to create a visually pleasing balance and the sense of unity. तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम कई सारे एलिमेंट्स को साथ लेके आ रहे हैं। जैसे हम एक ब्रोशर डिजाइन कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन का हम कोई पीस डिजाइन कर रहे हैं जहाँ पे हम बहुत सारे टेक्स्ट, इमेज, सर्टेन क्यूआर कोड एंड ऑल वी come together, and it's a good composition and all elements are in harmony with each other. So suppose जो तुम लोगों ने ये देखा था, सपोज कई बार तुम लोग एक टेबल फैंस देखोगे जिनके बटन्स जो होते हैं, ओवरऑल जैसे टेबल फॉर्म फैन राउंड होता है तो उसके बटन भी राउंड होते हैं। तो वो क्या है, फॉर्म की हार्मनी है, यानी कि जो ओवरऑल फॉर्म है उसके साथ हमारे बटन्स जा रहे हैं या इंटरेक्शन जा रहा है। सिमिलरली रेडियो में देखा होगा, बट रेडियो में क्या है, ओवरऑल फॉर्म रेक्टेंगुलर होता है, बटन्स राउंड होते हैं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। बट देयर आर सर्टेन, ये चीज टेबल फैंस में देखने को बहुत आसानी से मिल जाता है जहाँ पे एक राउंड फॉर्म होता है और बटन्स भी राउंड फॉर्म में होते हैं और नीचे का बेस भी राउंड फॉर्म में होता है। सो वो क्या कहलाएगा, फॉर्म की हार्मनी, फॉर्म्स हार्मनी। फॉर्म एक अलग टॉपिक है जो एक एडवांस टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस। सो स्टे ट्यून्ड, we will talk about the forms, we will talk about constructing the forms and deconstructing the forms. Coming back to our topic, which is harmony. Harmony is also in the thought process. Suppose
we 4 5 people come together and we share the similar thought process, is then there's the harmony of the thoughts. But if suppose someone do not follow a certain idea, somebody's understanding of design may not be similar to an Indian's designer's understanding. तो एक अमेरिकन डिजाइनर वहां के लोगों के हिसाब से सोचता है, इंडियन वहां के इंडियन के हिसाब से सोच रहा है, एंड इन दैट केस इट मे नॉट बी अ हार्मनी. बट जब सब सारे मिलके इंसान के हिसाब से एज अ यूजर एज अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो दिस इज द हार्मनी ऑफ द थॉट्स. Similarly is the harmony of the colors which we can see, then similarly is the harmony of the visual elements which we see in this example. All right, so these were the 5 crucial examples which were related for which are related to and crucial to our DET examinations. And out of the 20, I have filtered 5. Actually, out of the 7, I have filtered 5. There is another video, which is a concluding video to give an idea what are design principles, and post that I will take the questions if somebody have. So also in this presentation, I have shared, my presentation is visible, no, Ankit? दिख रही है ना presentation? यस सर, दिख रही है। Okay. So if you see, this is this product in itself. This radio is a good example of balance, rhythm, and this all elements come together to produce in harmony. क्योंकि यहाँ पे different different elements को good graphic design you see. This is a design by Paul Rand. Paul Rand जो थे जो अच्छा कई बार ऐसे डिजाइनर्स के वर्क का नाम याद रखा करो, IBM का लोगो किसने दिया. कई बार ये एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है कि who was the maker, who was the proposer, who was the designer of certain things. So logos और ये important हो जाते हैं. So you see, there's a good consideration given to movement, negative space and the positive space. Then the balance. See the balance of the negative space and the positive space. And then again, gestalt comes. वो ठीक है, वो भी हमारे काम की चीज नहीं है. बट डिजाइन प्रिंसिपल्स में अगर हम 5 सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन प्रिंसिपल्स, इफ समबडी आस्क मी, these can be the 5 design principles as per my experience, as per my understanding. But definitely there are more, and this we will try to understand with the video. Till this point, if there is any doubt, please do let me know. कोई डाउट है, कुछ पूछना है? अंकित, सुनी, कोई डाउट है? No, sir. Okay. And in this case, to conclude, I will share one more video, and this is an interesting video which talks about 7 principles of design.
All right. So this is an interesting illustration of all the design principles summed up beautifully on the basis of your visual basis. But definitely, this things find this understandings make you a better designer, or I would say at this stage, at least it puts you ahead of many people if you consciously practice all these principles in your designs, or I would say ideas, whatever you make, because at this point we are not making in itself a commercial product, but we are looking from the exams point of view, which is crucial for our exams. So this was from my side. If somebody has something to ask or some doubt, please do write to us in the given email ID, and do let us know if it is going interesting, and if you have certain queries or something which you want should be covered in this video classes presented by Career 360. All right, then Ankit and Sumi, thank you for being with us. If you have any doubt, please do let me know. Otherwise, we can conclude this session. So, Swimi, कुछ समझ में आया how it was? Yes, sir. Application part समझ में आया कुछ? See, Yes, more sir. you practice, more you apply, तो वो चीजें ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएंगी. Ankit, any feedback on this thing? नो सर, गुड, सही था. Okay. कुछ अलग क्वेश्चंस हैं जो, जैसे इस ये जो चीज है कि हम्म. हम लोग जो ये प्रोडक्ट डिजाइन में कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब कई चीजें हैं जैसे हम्म. हारमोनी वगैरह है, हम्म. तो उसको प्रोडक्ट देखो डिजाइन में अंकित, कैसे ऐसा अप्लाई कर नहीं सकते होता है. देखो ऐसा नहीं है कि सारे प्रिंसिपल्स हम कंपैरेटिवली फॉलो कर पाएंगे. कई बार ऐसा होता है कि सपोज वहां पे जरूरी क्या है, क्या एम्फोसिस देना है. सपोज कोई पार्ट है कंप्यूटर का या कोई की है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो हम उनको सर्टेन कलर कोड्स में दे सकते हैं. आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर, बट कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है. सपोज कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की सबसे ज्यादा यूज होने वाली की इक्वल टू है. बट हैं? यस सर. डिटरम्स के अगर तुम एग्जांपल्स में देखोगे तो सारे बटन्स का साइज लगभग सेम है, लेकिन इक्वल टू को साइज तो सेम है बट एट द सेम टाइम वो ऑरेंज कलर या येलो कलर से बनाते हैं. तो उन्होंने वहां पे एम्फेसिस का यूज क्यों किया? बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अ प्रोडक्ट. इफ आई हैव टू टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सिमिलरली ऐसा नहीं है कि अगर 20 प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल्स है तो सारे के सारे यूज हो जाएंगे. इट इज अ यूज केस सिनेरियो, कहाँ पे किस चीज की जरूरत है. तो एट दिस पॉइंट, क्योंकि लुकिंग फ्रॉम द दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज बेसिकली द बैलेंस ऑफ द टेक्स्ट एंड द इमेजेस विच व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन द पार्ट बी और द सेक्शन बी ऑफ द डेट एग्जामिनेशंस. वहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है. जैसे बैलेंस की अगर हम बात करें तो कितना पेंसिल यूज करेंगे और कितना कलर का यूज करें. इतना भी ज्यादा नहीं कर दें कि वो पूरा कलर कलर हो गया और हमारा सारा टाइम इसमें चला गया. बट सपोज हमने एक सॉल्यूशन बनाया, हमने ओल्ड एज के लिए एक हमने माउस का एक हमने सॉल्यूशन दिया है, और माउस को का हमने बटन येलो कलर का दे दिया, और फिर हमने इसका एक जस्टिफिकेशन दिया. बिकॉज ओल्ड एज पे पीपल के लोगों का जो आंखें हैं, नजरें कमजोर हो जाती हैं. देन वी कैन यूज दिस कॉन्ट्रास्ट और सम वेरिएशन इन द शेप टू डायरेक्ट देम for you to successfully use this product. So this can be an application from the that point of view when we are talking about design principles. But largely one thing or the other comes as a aid. This understanding of the principle in overall comes as an aid to anyone. सो एप्लीकेशन के ऊपर भी होता है कई बार अंकित कि हमारी जरूरत क्या है. अभी हमारी जरूरत सपोज इन दिस मीटिंग इज कि साउंड एंड दिस मैसेज शुड बी क्लियरली गिवन दैट we are career 360, we are putting hard and efforts to sensitize the people or help the students about design. So how we put the message in the background, or are we just putting the logo which is required and what colors we are using. तो ये सारा डिजाइन प्रिंसिपल्स की ही अंडरस्टैंडिंग है. लाइक अगर सपोज मेरा बैकग्राउंड है,
ये ब्लैक पे वाइट होता तो अच्छा लगता, बट ब्लैक बैकग्राउंड अक्सर हम लोग अवॉइड करते हैं। अब उसके लिए एक एक्सपीरियंस भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। ऑल्सो दिस इज अ लोगो, तो ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो इफ यू सी दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो कितना अच्छे से करियर 360 क्लीनली दिख के आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी जरूरत थी, कैलकुलेटर में उसकी जरूरत थी, और इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट यूज के सिनारियोस होते हैं, where we use interchangeably or alternatively or together the design principles. ठीक है ना? I hope I was able to answer your question. यस। Okay. Okay, then I would like to close this session, and we will meet in our next class, which is tomorrow, and which is again going to be an interesting topic around data examinations. So stay tuned and keep posting your queries, and do take benefit of your our free study material. All right. Wishing you all the very best. See you.